Good morning. Welcome and thank you for attending this fifth episode of the International Crown Ambassador Interview Series. गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्राउन एम्बेसडर इंटरनेशनल शो को देखने के लिए। Mute. You are mute. Buenos días, bienvenidos a esta sesión de entrevistas. This series will be held every Tuesday. यह सीरीज हर मंगलवार को होती है। Estas entrevistas se llevan a cabo todos los días martes. The intention for us is to learn from the success story from our Crown Ambassador in the DXN world. हमारा ये प्रयास रहता है, हमारा ये उद्देश्य है कि इस सीरीज के माध्यम से जो क्राउन एम्बेसडर है हमारे इंटरनेशनल, उनके अनुभवों को आपसे साझा करें। La intención de estas entrevistas es aprender acerca de las historias exitosas de nuestros embajadores Corona. My name is SKTO and I'm the host for today. मेरा नाम SKTO है और आज का मैं इस शो का संचालक रहूंगा। Mi nombre es SKTO y voy a ser el anfitrión en esta mañana. And we have Mr. Vijay to help us translate in Hindi. He's our North Region Marketing Manager, and Miss Luisa to help translate on Spanish. She's our Bolivia PIC. मेरे साथ मिस्टर विजय रहेंगे जो इंडिया से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, और हमारे साथ हमारी बोलिविया की PIC मिस लुइसा जो स्पेनिश में ट्रांसलेट करेंगी। En esta oportunidad tenemos a Mr. Vijay, él es nuestro gerente regional del área norte de marketing, y también tenemos a Miss Luisa Porras, ella es la encargada de país de Bolivia. So before we invite our esteemed Crown Ambassador, I will give you some basic information about him. इससे पहले कि आज हम अपने अति विशिष्ट क्राउन एम्बेसडर को यहाँ पे बुलाने से पहले उनके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा।
Antes de presentar a nuestro embajador Corona, me gustaría darles una pequeña introducción acerca de él. Before DXN, he is a tailor and now he is a professional network marketing. डिक्सन से पहले वो एक टेलर थे। आज की डेट में वो एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं डीएक्सन के अंदर। Antes de empezar de XN, él era un costurero y ahora es un profesional en el network marketing. They are one of the pioneers in the Bolivian market. वो बोलिविया मार्केट के एक बेहतरीन नगीने हैं। Él es uno de los pioneros en el mercado de Bolivia. They are also all-time qualifiers for TSI. इन्होंने हमेशा टीएसआई क्वालिफाई किया है। Él es uno de los que siempre ha estado calificando para los TSI. They joined DXN in September 2010. इन्होंने डीएक्सन में अपने सफर की शुरुआत सितंबर 2010 में की। Él se unió a DXN en el año 2010, en el mes de septiembre. And became the first Bolivia Crown Ambassador in August 2019. और 2019 में बोलिविया के पहले क्राउन एम्बेसडर बने। Y se hizo embajador Corona, el primer embajador Corona de Bolivia, en agosto del año 2019. So let us invite our Crown Ambassador, first Crown Ambassador from Bolivia, Mr. Jaime Colque. आइए हम स्वागत करते हैं बोलिविया के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर हाइमे काल्के। Así que démosle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, señor Jaime Colque desde Bolivia. Welcome to this show, sir. Bienvenido, señor Jaime. Welcome. Do you want to Buenos días de XN Internacional. Un saludo cordial desde Bolivia para el mundo. Un placer de poder estar acá con ustedes. Gracias por la invitación cordial. Good morning, DXN. This is a very honor for me to be here. Thank you for the invitation and very warm greetings for all of you. गुड मॉर्निंग डीएक्सन। मुझे बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस शो में बुलाया गया और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। So without further ado, we will start with our first question. इससे अब हम शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। Vamos a empezar con la primera pregunta. How did your journey in DXN begin? डीएक्सन में आपकी शुरुआत कैसे हुई? ¿Cómo comenzó su camino en DXN? Ok, obviamente antes de unirme, elegí la compañía de DXN. Tenía que comprobar la eficacia de los productos de DXN. Empezamos como cliente a finales de septiembre de 2010, obviamente con una gran idea de negocio. Empezamos como distribuidor independiente 1 de octubre de 2010 a tiempo completo más horas extras. Estaba totalmente seguro que la oportunidad para cambiar mi vida y mi futuro económico en el área de salud y cumplir mis sueños fue de XN. Así que estoy sumamente contento, feliz de poder pertenecer a una compañía que se llama Internacional. Thank you. So before starting with DXN in this company, I had to prove that the products were real, that the products really work on it. So I started as a client in September 2010 with a very clear idea to have a very good business. So I started as a distributor in October, the 1st of October 2010. I started doing DXN full-time plus our extra hours. So I was really sure that this is going to be the best opportunity for my life to have a good health, to fulfill my dreams. Now I am very happy to become a DXN member. सबसे पहले कि जब मैंने डीएक्सन को शुरुआत की मैंने तो सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना था अपने आप से भी और ये जानना था कि ये प्रोडक्ट वाकई में काम करता है कि नहीं करता है। तो मैंने सितंबर 2010 में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अपनी शुरुआत करी और मुझे तब ये पता लगा कि ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत ही बेहतरीन है
और अक्टूबर 2010 में मैंने इसको कंज्यूम करना शुरू किया। और साथ साथ जैसे मैं इसको कंज्यूम करता गया तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं वैसे पार्ट टाइम करता रहा, और लेकिन जैसे जैसे मैं इसको इस्तेमाल करता गया तो मुझे लगा कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बेहतरीन ये व्यवसाय है जिसको मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने इसको फुल टाइम में करना शुरू किया और मुझे आगे सफलता मिलती गई। There is a very, how do you say, quite some people start from testing or having the product at first, and soon they will become a distributor and start the business. So our next question is, why did you choose direct selling as a career? आपने डायरेक्ट सेलिंग को करियर के रूप में क्यों चुना? ¿Por qué eligió la venta directa como carrera? Ok, para mí es vehículo donde comienzas con poca inversión, puedes obtener grandes ganancias. El tema es asociarte, elegir una compañía real con productos reales que tenga un plan de compensación muy generoso como DXN. Esa fue la razón. Porque nosotros estábamos con sed, con hambre, tener éxito. Y para cualquier persona que quiera hacer negocio con baja inversión, la que va a llevar a cumplir su sueño, para mí es el network marketing o redes de mercadeo. Porque ahí entiendes que trabajamos con personas. Cualquier persona que entienda el apalancamiento puede ser exitoso a través de este sistema, lo que viene a ser venta directa. Entonces, esa fue la razón para cumplir mis sueños, con la inversión mínima y tener grandes ganancias y viajar por el mundo. Thank you. So I understood that this is the best vehicle to start a business, because you start this business with a small amount of money, a very small amount. So when you invest the small, you have a very good income. So I understood that this is a real company that provides us a good plan, very generous plan, marketing plan. So this is the reason why I started. Because when I started doing this business, I wanted to have success. I wanted to succeed in this business. So this is the reason why any person started this business in network marketing, because you know that when you invest not too many money, you are going to grow very fast because of the network marketing. So this is when you understand that many people is going to be successful just investing a few amount of money and doing this business, and you are going to have the opportunity to invest a few amount of money, earn a lot of money. You are going to have the opportunity to travel around the world with this system. मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे सबसे जो महत्वपूर्ण बात लगी कि ये बिजनेस कम बजट में भी किया जा सकता है। यानी आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा अमाउंट, एक अच्छी इनकम आप प्राप्त कर सकते हो। जब मुझे लगा कि वाकई इसके अंदर बहुत अच्छी इनकम आ रही है और कम लागत के साथ साथ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा वास्तविक लगा, रियल लगा। साथ साथ कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है, जो मार्केटिंग प्लान है, वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। यही एक कारण था कि जिससे कि मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया एज ए कैरियर के रूप में। साथ साथ मैं चाहता था कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं एक सफल इंसान कहलाऊं। कोई भी व्यक्ति इस व्यवसाय को कर सकता है, छोटी सी लागत में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ ले सकता है वो। साथ साथ यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली देश विदेश की यात्रा करने का, घूमने का मेरे को बहुत ज़्यादा मौका मिला, और साथ साथ बहुत ज़्यादा मेरे को पैसा भी मिला। तो इसीलिए मैंने डीएक्सन को अपने कैरियर के रूप में चुना। Remember, we are a real company. So one of the unique point that he has mentioned here is that we DXN, our direct selling business is have low
entry investment, low to none. So what are you waiting for? Let's have our look at next question. So being DXN distributor, what are the challenges you face while starting business, and did your upline or mentor help you to overcome these challenges, and how? डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपको डीएक्शन बिजनेस शुरू करते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या आपके अपलाइन मेंटर्स ने इन चुनौतियों को दूर करने में आपकी मदद की और कैसे? Ok, al ser un distribuidor en DXN, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentó cuando comenzó su negocio en DXN? ¿Su línea ascendente, mentores, le apoyaron para superar estos retos? ¿Y cómo? Bien, cuando nosotros comenzamos en octubre de 2010, en aquel tiempo, en Bolivia no estaba la compañía, no había gerencia, no había productos. A veces, por falta de productos o por el apoyo de la compañía, más sin embargo, nosotros íbamos fuera de Bolivia a capacitarnos, a entrenarnos. Yo creo que para mí sería el mayor reto de poder manejar las objeciones, porque la pregunta de los distribuidores era: ¿cuándo vamos a tener productos? ¿Cuándo nos van a pagar los bonos? Pero con los productos podíamos hacer posible para que tengamos en nuestras manos, fue contundente resultados. Yo les decía, si el producto te está haciendo bien, esto es cuestión de tener paciencia. La compañía, no creo que no vea el crecimiento increíble de XN Bolivia, así que iba a ser realidad este sueño. Así que tuvimos la paciencia de poder soportar a la red. Fue en el año 2011. Sí, más de un año. Obviamente, gracias a la gerencia de los países vecinos como Perú, siempre están ahí en contacto, o la gerencia de México, podíamos recibir que nosotros mantengamos el enfoque y sigamos construyendo redes, porque esto iba a ser una realidad. Y efectivamente sucedió eso. Se hizo el año para los bolivianos. 27 de marzo, apertura de la compañía. Fue algo impresionante, de poder donde la compañía establezca sus oficinas corporativas en Bolivia. Obviamente nos apoyó nuestros ascendentes que están fuera del país, y también la gerencia de diferentes países. Así que gracias por todo eso cuando nosotros comenzamos. Quizás fue la mayor dificultad para nosotros eso, pero nosotros estuvimos preparados para afrontar esos retos. Thank you. So when we started the business in October 2010, the big challenge that we had to face is that there was no company here in Bolivia. There was no management, there were no products here in Bolivia, but we have to say that we have the support of the many distributors out of Bolivia. We had to be trained in another countries like Peru, for example, no? So this was the biggest challenge that we had to face, that we did not have any management, we did not have any products here in Bolivia, but we have to learn how to manage these objections. So when the product is, the people were asking a lot of questions about the products. When are the products going to come into Bolivia? Where are the bonus going to be paid? So we did not have the answer at that time. So we have to see many results after that, no, because the products were not here in Bolivia, there was no management. So we had to tell the people that the products are okay, that they have to be patient, because the company is going to see how Bolivia is growing without products, without management, and this is going to be something important that is going to become reality. So you have to be patient. So the big challenge is that we did not have any management or products here. So we started to make the network starting 2011. It was more than 1 year. So we have to thank Peru. We have to thank the management of Peru, because we have the contact there. We receive products from Peru. We receive training from Peru. And that what the management there in Peru said, that we have to maintain focus in the reality.
and all our dreams were going to become true. So that is when in March of 2000, on March 27, we started the business here in Bolivia. We settled the office with the management, with the real management here. So thank you for all this opportunity that we have. I think this is the big challenge we had to face. जी हाँ, चुनौतियाँ तो हमने बहुत सारी झेली। शुरुआत में कंपनी नहीं थी बोलिविया के अंदर, कोई प्रोडक्ट नहीं थे, कोई मैनेजमेंट भी नहीं थी, और हमें जो भी सपोर्ट मिल रहा था, जो भी ट्रेनिंग मिल रही थी हमें, वो दूसरी कंट्री से मिल रही थी। अब हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं थे, तो मेंबर हमसे सवाल पूछते थे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमसे सवाल पूछते थे कि प्रोडक्ट भी नहीं है, काम भी हम लोग कर रहे हैं, तो क्या हमें बोनस मिलेगा? अब इन सवालों का जवाब मैं उन्हें बहुत ही धैर्यपूर्वक देता था कि जी हाँ, काम करते रहिए, कंपनी हमें देख रही है, कंपनी हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है, और डेफिनेटली इन सब चिंताओं को आप डिरेक्शन पे छोड़ दीजिए और अपना काम करते रहिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती थी। हमने 2011 में अपना नेटवर्क का काम शुरू किया, बिना किसी मैनेजमेंट के, बिना किसी कंपनी की यहाँ पे ब्रांच के। हमें जो प्रोडक्ट मिलते थे, जो ट्रेनिंग मिलती थी, हमें पेरू से मिलती थी, जो भी सपोर्ट मिलता था हमें पेरू की मैनेजमेंट के द्वारा मिलता था। लेकिन हमने एक चीज़ पे हमेशा ध्यान रखा, हमने फोकस रखा अपने काम के प्रति, और हमने हमेशा सच्चाई की तरफ देखा और अपने सपनों की तरफ हमने देखा, और उसका पूरा करने के लिए हमने पूरा प्रयास किया। 27 मार्च के आसपास जाके करीब हमारा जब कंपनी का यहाँ पे ब्रांच आया और हमारा यहाँ पे काम शुरू हुआ, और इस तरीके से जो हमने पिछली चुनौतियाँ थी वो हमने बड़ी ही धैर्यपूर्वक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में लेते हुए यहाँ पे काम किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चैलेंजेस और चुनौतियाँ जो भी आई, वो हमने साथ में मिलके उसको हमने फेस किया, और फेस करने के साथ साथ हमने डिएक्शन में काम करते रहे, और आज उसका परिणाम है कि डिएक्शन के बोलिविया के अंदर डिएक्शन मौजूद है। So when doing DXN business, you need to be patient. If you need to only do whatever you can until the support will arrive. So you just be patient and do whatever you can and wait for it. So we have a great concept in DXN, one world, one market. So how do you think has DXN's one world, one market concept inspire you? डिएक्शन की वन वर्ल्ड वन मार्केट अवधारणा ने आपको कैसे प्रेरित किया? ¿Cómo le ha inspirado el concepto de un mundo, un mercado? Bueno, este concepto básicamente se aplica porque cualquier líder que entienda nuestro modelo de negocio puede construir redes en 5 continentes, de poder generar ingresos residuales a nivel internacional, de poder viajar. Así que esto es para mí un mundo, un mercado, un poder para construir redes donde no hay límite en DXN. Eso es lo que a mí me fascina. También ha sido uno de los motivos por la cual he tomado la decisión de unirme a DXN. Mi sueño es tener muchos diamantes en diferentes partes del mundo. Gracias a DXN. Thank you. So this concept of one world, one market is something that any leader has to follow. This is a model of business because we can build any network in the 5 continents, and you are going to receive residual income, and you are going to have the opportunity to travel. So one power, this is the power that you have to build a very strong organization, a very strong network. With this, you don't have no limit. This is something very important, and this is something that I love about DXN, because this is the way you have to take the decision to join all the continents. So his dream in DXN is to build a lot of diamonds around the world.
he wants to have a lot of diamonds around the world in DXN. ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन है और मैं ये सुझाव दूंगा कि सभी लीडर्स को इसको अपनाना चाहिए। ये मॉडल बहुत ही एक बेहतरीन मॉडल है और इसके द्वारा हम जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं विश्व में, हम अपने बिजनेस का यहाँ पे फैलाव कर सकते हैं। साथ साथ हमें यहाँ पे एक अच्छी आर्थिक आय के साथ साथ हमें एक मौका मिलता है देश विदेश की यात्रा करने का और साथ साथ एक बहुत ही ताकतवर हमें नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है और यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें जहाँ चाहें अपने व्यवसाय को आप फैला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से मुझे डिसीजन जो लेने में बहुत ही ये मैं जो डिसीजन लिया डिक्सन को करने का, बहुत ही मुझे मजा आया। आज के समय में पूरे विश्व में मेरे कई डायमंड्स हैं मेरे ग्रुप के अंदर और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। So you see, this one world, one market. When if you achieve a crown ambassador, like this program is meant for appreciate the crown ambassador. He's a crown ambassador in Bolivia. We also recognize him in India as crown ambassador. So this is the one world, one market concept. So we also know that in direct selling, you need to do a lot of training. So what do you think is more important? Product knowledge, marketing plan knowledge, or other special knowledge? डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज या मार्केटिंग प्लान की जानकारी? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿El conocimiento del producto, el conocimiento del plan de marketing u otro conocimiento en especial? Ok, para empezar a construir redes y ser exitosos en DXN, para mí básicamente son 3 puntos o 3 aspectos importantes. Punto número 1, el conocimiento de la empresa, los hechos de la compañía, productos definitivamente y plan de compensación, el sistema de formación. Porque si nosotros no tenemos conocimiento y no usamos el producto de DXN, va a ser difícil confiar en el producto y para poder transmitir a muchas personas. Obviamente, para empezar a soñar en grande, para obtener libertad financiera, también de igual manera tenemos que conocer profundamente el plan de compensación, que el sistema de formación de DXN funcione, trabaje para nosotros y así vamos a alcanzar la libertad financiera en DXN. Thank you. So, to start building our success, there are 3 important things we must follow. These 3 important things is very important to start our business. So first of all, you have to know everything about the company. You have to know everything about your company. Then you have to know about your products. It is very important to know about your products. And finally, if you want to build a very strong organization, you have to really know about your marketing plan. So these are the 3 important things that you must know. If we don't know how about our company, if we don't know how to use our products, if we don't know how to build an organization by our marketing plan, it is going to be very difficult to dream in our freedom, to dream about our freedom. So you have to know your plan. You have to know that the system works very good. The system of DXN works, and this is something that you have to do with a lot of work, hard work. किसी भी व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि आपको उस कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक छोटी से छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, उस कंपनी के प्रोडक्ट के उत्पादों के आप उत्पाद बने, यानी उस प्रोडक्ट के उत्पादों को आपको भरपूर सेवन करना चाहिए। उनके उत्पादों के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी होना चाहिए, आप बेहतरीन कंज्यूमर होने चाहिए। तीसरा, ऑफ कोर्स, आपको उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और चौथा, आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरह से काम करती है,
कि ये दोनों चीजें होगा, कंपनसेशन प्लान, आपके मार्केटिंग प्लान की भी आपकी बारीकी से उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ये तीनों बातें नहीं जानते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। अगर आप वास्तव में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपनी आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम के बारे में और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और साथ साथ मार्केटिंग प्लान के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और साथ साथ आपको सिस्टम को फॉलो करना है और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। So product knowledge, and then marketing plan, and the company knowledge. These are the three things are very important in order to be successful. Remember to follow the system. Do not reinvent the wheel. Then you will be successfully. So everybody have new prospects, and they would like to invite them to join the business. So what do you think to attract them to join this business? Mientras habla con un nuevo cliente potencial, ¿qué le dice que lo atrae a este negocio? Ok, básicamente cuando estamos enfrente de un prospecto, yo tengo que identificar su necesidad, qué es lo que quiere esa persona. A lo mejor le interesa la salud o la oportunidad. Muchas veces la gran mayoría empiezan a tomar una decisión de usar nuestros productos y por lo tanto nosotros tenemos que tener paciencia como líderes. Primero, que ese cliente potencial encuentre un resultado. Empieza a usar los productos, le damos la información de ganoterapia, luego invitamos a una reunión de oportunidad donde va a poder ver y escuchar atentamente nuestra oportunidad de negocio y muchas veces ellos toman la decisión de hacer, porque uno salud, riqueza, esto felicidad, de poder tener libertad en salud. Es lo que están buscando las personas y así es como comenzamos con un prospecto. Obviamente, nosotros constantemente estamos usando los productos, demostramos ante los centros de servicios de DXN la actitud positiva y a la gente le gusta esa onda. Thank you. So basically, we have to identify the necessity, the needs of the people. No, what do they want? What they really want? Maybe they are looking for some help, or maybe they are looking for an opportunity. So they have to decide, and you have to help them decide what they want. Then they have to decide to use the product. So we have to be patient. We have to be patient with this because, first of all, our clients, our prospects, they need to see the results. And how do they see the results? By using the products. So when they use the products, we start teaching or guiding them with the gynotherapy. Then we are going to give them the opportunity of the business. We make the training about the business opportunity. So this is how they are going to see an opportunity of business. So they have to take the decision. They have to make the decision of making the DXN. With DXN, we provide the people health, wealth, and happiness. Of course, after that, you are going to have the freedom that you need. That is how we started doing the business with a prospect. So we have to be constant, we have to focus, we have to teach the people how to use the product, and we have to demonstrate in the service center, for example, that always we have to get a very positive attitude to do the business. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि प्रश्न था कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से इस व्यवसाय में लाया जाए और उसे जो एक नए प्रोस्पेक्ट से किस प्रकार आप इस व्यवसाय के बारे में बताते हैं,
इस व्यवसाय के लिए वो आप किस प्रकार एक नया प्रोस्पेक्ट आकर्षित होता है। तो प्रश्न ये था हिंदी में। तो जो हमारे दर्शक हैं हिंदी में, उनके लिए मैंने प्रश्न दोबारा रिपीट किया स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए जो हमारा नया प्रोस्पेक्ट होता है, जो हमारा नया जो इस व्यवसाय के लिए जिसको हम जोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसकी आवश्यकता के बारे में जानना है। हो सकता है कि उसे किसी मदद की जरूरत है, या हो सकता है कि वो कोई एक अवसर ढूंढ रहा है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, और साथ साथ ये उसे डिसाइड करने देना है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि धैर्य रखना है, पेशेंस बना के रखनी है, और धैर्य रखना है, और जल्दबाजी कहीं पे भी हमें नहीं दिखानी है। सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि वो एक कंज्यूमर बने, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे। जब वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा तो उसे, जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से जब उसे फायदा होगा, तो हम उसे प्रोडक्ट के फायदे के बाद हम उसे गैनोथेरेपी के बारे में समझाते हैं। गैनोथेरेपी की उसे हम जानकारी देते हैं, और गैनोथेरेपी की जानकारी के जब समझ में आती है, जब उसे रिजल्ट मिलता है, फायदा होता है प्रोडक्ट से, तब हम उसे धीरे धीरे हम उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बताते हैं। और साथ साथ हम ये बताते हैं कि हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, यानी स्वास्थ्य और साथ साथ धन संपत्ति और साथ साथ खुशियां, ये हर किसी की आज की डेट में ह्यूमन बींग्स की जरूरत है। यहाँ से हम उसकी शुरुआत करते हैं, और एक चीज पे हमेशा हम ध्यान रखते हैं, अपना फोकस रखते हैं, आपके अपने सपनों की तरफ और अपने काम के प्रति फोकस रहते हैं। फिर सर्विस सेंटर पे हम उसे ले जाते हैं, और सर्विस सेंटर में उसको ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित करते हैं, और वहाँ पे उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सब बातों में, हमेशा हम अपना जो एटीट्यूड है, जो अपना हम धैर्य को बनाए रखते हैं, साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा के सोच के साथ हम इसके अंदर काम करते हैं। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आप हमेशा धैर्य से काम लें, और व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से, जो उसको ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको मदद देने का, उसको गाइड करने का आप प्रयास करें। So when you talk to the new prospects, you need to sell without selling, and remember to use the farming approach. Be patient, not the hunting approach. So after you successfully attract the prospect, what do you do to convert a consumer to distributor? आप एक कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कैसे बदलते हैं? ¿Cómo convertir un consumidor en distribuidor? Ok, para que nuestros clientes, tenemos que tener clientes satisfechos. Punto número 1. Punto número 2, los mejores líderes no te dicen a la primera que sí quiere hacer XN. Por lo tanto, simplemente es que el cliente esté totalmente satisfecho con los productos, que no tenga la más mínima acerca de ganoderma, y ellos van a ser nuestros próximos diamantes. Sin embargo, tenemos que tener paciencia. Muchas veces se desesperan a que de una vez arranque, empieza a hacer XN, porque queremos tener éxito. Pero yo les pido paciencia y tampoco el secreto es hacer el seguimiento y es invitando cada cierto tiempo a nuestra reunión, ¿ya? Y ellos van a ser nuestros próximos diamantes. Thank you. So to make our consumers or clients become distributors, first of all, you have to be sure that the clients have to be satisfied with our products. So most of our leaders, what they want is to be satisfied with the product. So after that, you are going to ask them if they want to do DXN as a business. But first of all, they have to be satisfied with the products. So they have to know a lot about our Ganoderma. So they are going to be our next diamonds in the business. First of all, you have to be very patient with them. You don't have to force them to do the business if they are not really sure about this. Sometimes people get desperate about
the business because they want to have success very quickly, but you have to follow them, you have to sponsor them in a good way. So then you have to invite to the next meetings, you have to teach them, you have to guide them in a really positive way so that they are going to be our next diamonds in the business. बिल्कुल, जब हम एक कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में बदलते हैं तो हमें बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए और इस बात की पुख्ता तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जो हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से उसने इस्तेमाल कर लिया है और साथ ही हमारे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, तब हम उसे धीरे धीरे बिजनेस की तरफ ले जाते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। देन गैनोडर्मा के बारे में उनको आप जानकारी दीजिए। गैनोडर्मा के बारे में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप उन्हें देंगे वो बहुत ही बेहतर होगा उनके इस व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए। उनमें से बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो डायमंड भी बनते हैं और साथ साथ कभी कभी ये भी देखा गया है कुछ हमारे जो लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि जल्दी से जल्दी वो कामयाब हो जाएं। नहीं, धैर्य रखना है, पेशेंस बना के रखनी है और आराम से धीरे धीरे आपको इस काम को करना है। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, स्पॉन्सरिंग करने से पहले आपको पहले उन्हें बुलाना है, उन्हें उसको अच्छी कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी देनी है, सही तरीके से जानकारी देनी है आपको, साथ में उनको गाइड करना है, उनको समझाना है, उनको सही रास्ता दिखाना है और ये सब बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब हम इस तरीके से सही मार्गदर्शन उनको देंगे तो उनमें बहुत सारे लोग आगे चल के कामयाब होते हैं और डायमंड बनते हैं। I agree with what he says. You have to be patient and also slowly build your way up. You have to satisfy one's need in order to move forward. So just now you mentioned that the company has paid for his traveling for overseas. So DXN has given us a travel opportunity to distributor. How can a newcomer or old distributor avail for this opportunity? DXN डिस्ट्रीब्यूटर्स को विदेश यात्रा का अवसर देता है। कोई नए या पुराने डिस्ट्रीब्यूटर इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता है? DXN ofrece oportunidad de viajar a los distribuidores. ¿Cómo un nuevo distribuidor o uno con más tiempo puede aprovechar esta oportunidad? Efectivamente, DXN propone un incentivo de viaje anualmente a diferentes partes del mundo. Definitivamente, primero, uno tiene que tomar la decisión de construir redes. La que va a producir puntos TCI es la organización. Yo les puedo contar mi experiencia o nuestra experiencia. Trabajamos junto con mi esposa. Trabajamos todo el año 2011. Son un año. En 2012, un año después, nosotros calificamos a un TCI para 2 personas el primer año. Quiero decirles a todos los miembros de la gran familia de XN, es posible. Simplemente toma una decisión. Quizás el primer TCI, alcanzar el primer viaje, quizás les va a costar, les tiene que costar. Y al siguiente año, yo creo que va a ser ya muy fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la red ya produce. Así que cualquiera que se lo proponga de verdad y está dispuesto de construir la red y liderar, estoy seguro que vas a alcanzar los próximos TCI y vas a viajar por el mundo junto con nosotros. Thank you. So, in fact, this is something very important. DXN gives the people the opportunity to travel. This is a very important point that you have to know. DXN gives you every year
the opportunity to travel to different parts of the world, to different countries in the world. So what first you have to do is to take the decision, to have the decision on your hands, to build the network, to build your organization, because your organization is the one that is going to give you the TSA points. The TSA values is going to be given by your networks. So I want to tell you the experience that I had with my wife. We worked during the whole year 2011, and we worked very hard together with our organization. So that is why when the next year we qualified for the TXI, but not for one, for two people. So that is why I knew that I wanted to do my dream come true, because I wanted to travel. So what I want to tell you that is this is something possible. This is going to happen if you decide. First, you have to build your organization. The first travel, the first qualification, maybe it's going to be difficult for you to achieve, but after you start leading your group, the next TSIs are going to be easy, and we are going to have the opportunity to travel with you if you take the decision to build a very good organization. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमारे डीएक्सन के एक मार्केटिंग प्लान का हमारे ये हिस्सा है। डीएक्सन आपको देश विदेश के यात्रा करने का मौका देता है, यानी विश्व के कोने कोने में आपको घूमने का डीएक्सन मौका देता है। ये सब आपके हाथ में है। अपने दिल दिमाग को, अपने आप को पूरा फोकस करके अपने व्यवसाय को, अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाइए। जब आपका नेटवर्क बिल्ड होगा तो आपको टीएसआई पॉइंट्स आपके नेटवर्क के माध्यम से आपको मिलेंगे और आपको देश विदेश घूमने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिसके लिए आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन वाकया बताना चाहता हूं कि मैं 2011 की बात है कि मैं और मेरी पत्नी ने दोनों ने क्वालिफाई किया टीएसआई के लिए, 2 लोगों के लिए। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये तो मेरे लिए एक सपना पूरा होने जैसी स्थिति थी कि कहाँ मैं अकेले की बात कर रहा था और कहाँ मेरी पत्नी भी, और हम दोनों देश विदेश की यात्रा करेंगे, और वो भी डीएक्सन की तरफ से और डीएक्सन के मार्केटिंग प्लान की बदौलत और मेरे नेटवर्क की बदौलत मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। मैंने ये बातें आपसे क्यों बताई? मेरा बताने का ये बातें उद्देश्य आपसे ये था कि अगर आप पहली बार अगर प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है तो आप सिंगल के लिए क्वालिफाई करें, या आप अगर रह भी जाते हो तो कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने नेटवर्क के साथ मिलके और ज्यादा हार्ड वर्क करना है, अपने नेटवर्क में और ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी करेंगे। आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलेगा, और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपका ये लगातार ऐसा आपके साथ होने लगेगा और आपको वह विश्व के कोने कोने में घूमने का मौका मिलेगा। So this, according to Mr. Jaime, it is very hard to achieve to achieve TSIP points and become a qualifier. But once you qualify once, it will be easier in the next time. So it's like our unique feature of legacy, that you can pass down your legacy. First you do, and then you will eventually be easier. So now I would like to ask your opinion on what would you like to tell the younger generation on DXN as a full-time career? आप पूरा समय कैरियर के रूप में डीएक्सन को चुना, पर युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगे? ¿Qué le gustaría decirle a la generación más joven sobre DXN como una carrera a tiempo completo? Ok, yo creo que si uno tiene la oportunidad de conocer DXN a los 20, a los 25, tienen una gran oportunidad de disfrutar de la vida. Simplemente yo les puedo hablar, por ejemplo, nosotros empezamos DXN a tiempo completo más horas extras. Sería hacer el DXN todo
Ellos van a tener una granja de alcanzar la libertad financiera antes de los 25, antes de los 30 años. Créanme que esto vale la pena, ¿sí? Jóvenes y señoritas de XN, realmente esto es grandioso, espectacular, no simplemente en el aspecto de desarrollo personal, en el aspecto de generar ingresos, sino de viajar por el mundo, sino más que eso, ustedes se van a forjar como líderes. Debajo de ustedes van a haber cientos, miles, millones de personas. Así que estoy seguro que en diferentes están emprendiendo este sistema, ustedes van a disfrutar, van a tener suficiente tiempo para disfrutar con DXN y tener una experiencia de vida va a ser algo inolvidable para cada uno de ustedes. Thank you. So this is a very good opportunity for the people that is starting. For the people who is already 20 or 25 years old, this is a very great opportunity for you to enjoy the rest of your life. So this is very simple. You have to, I told you before that when we started DXN, we started doing DXN full-time plus extra hours. So you have to do DXN all of the time. All of the 24 hours of the day, you have to do DXN. So when you are 25 years old, you are going to have the opportunity to enjoy your life. So believe me, this is worth it. This is the message for all the young people. This is going to be great for you. This is going to be spectacular for you, not because of the personal development, not because of the income you are going to have, not because of the opportunity you are going to have, but because you are going to become a very great leader, and you are going to be followed by hundreds, millions of people under you, and you are going to have many opportunities to enjoy your life. You are going to have the time to experience your life, and this is going to be very unforgettable for you. So take this opportunity with DXN. DXN को एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के रूप में बहुत ही बेहतरीन एक अवसर है। DXN एक बहुत ही अच्छा अवसर है, मैं ये कहना चाहूँगा। यदि आपकी उम्र 20 से 25 साल है तो ये बहुत ही बेहतरीन समय है आपको DXN करने का, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करने का और जीने का। जब हमने DXN की जब शुरुआत की थी तो हमने उसको फुल टाइम भी किया और साथ में हमने एक्स्ट्रा टाइम भी हमने लगाया उसके अंदर। हमने बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी हमें, क्योंकि हमें आगे बढ़ना था और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय लगाना पड़ा। लेकिन अगर आपकी उम्र 25 साल है तो मैं ये कहूँगा कि ये बेहतरीन आपके लिए लाइफ को जीने का, एंजॉय करने का एक बहुत बेहतरीन मौका है और एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मेरी बातों पे आप विश्वास कीजिए, इससे इसका वाकई में बहुत ज़्यादा महत्व है। ये बहुत एक महान अवसर है, साथ में एक बहुत बेहतरीन आपको ज़िंदगी को बदल देने वाली आपका एक अवसर है, क्योंकि ये खाली इसलिए नहीं कि इसके अंदर आपका पर्सनैलिटी को देख के इन्फ्लुएंस हो गए या फिर आप इनकम को देख के इन्फ्लुएंस हो गए। आप इसके अंदर एक बेहतरीन लीडर बनेंगे, आपके साथ हजारों लोग जुड़ेंगे, आपका एक बेहतरीन नेटवर्क बनेगा, आपको हर जगह बेहतरीन एक रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे और साथ साथ आपको अपनी लाइफ को जीने का बहुत ज़्यादा एक मज़ा आएगा। और कैरियर के रूप में अगर आपसे शुरुआत करते हैं तो मेरी बात पे आप विश्वास कीजिए कि आपको वो सभी मिलेगा जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। In these pandemic times, there's a lot of people struggling to do the XM business and not sure what to do. So, what can a new and existing distributor do to grow their DXM business that you can give? इस कोविड-19 के दौरान, महामारी के दौरान नए मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर अपने DXN बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? Durante este tiempo de COVID hay muchas personas que no saben qué hacer. ¿Qué pueden hacer los distribuidores nuevos o existentes
para hacer crecer su negocio en DXN. Ok, perfecto. Primero, no perder el enfoque. Dos, conectarse al sistema de formación de DXN, ya sea presencial o a través de virtual, a través de estos medios de comunicación. Luego empezar a invitar a nuevos distribuidores, a los distribuidores existentes también. Estar siempre conectado al sistema de DXN y también a los prospectos. Y ahora, si bien ya tienen personas que están a DXN, simplemente depende de la región, del país. Si bien no pueden hacer entrenamientos presenciales, tenemos que usar la clave es no parar de hacer esto, el sistema de redes. DXN tiene el sistema de formación. Nosotros no paramos en estos últimos meses y los resultados están ahí, seguimos creciendo y estoy seguro que ustedes también lo van a hacer de igual manera. Thank you. So first of all, you don't have to lose your focus. You have to keep focus on the business. You don't have to go anywhere. You have to focus on your business. Second, you have to connect the people. It can be in training, normal trainings, or you can do it in a very, you can do it virtual. No, you can do trainings, presential trainings, or maybe you can use these platforms to connect the people. And third, you have to invite new prospects, and also you have to invite the prospect that you already have in your organization. But the clue here is that you have to keep focus on your prospect. You have to do the follow, you have to follow them, you have to invite, you have to guide them, because if there are some people, it will depend on the country. It doesn't matter which region or which country they are. You have to train them. You have to use this virtual opportunity to teach the people. The clue here, the important thing here is that you don't have to stop. You have to continue. You have to do follow the system. You don't have to stop, because when you start doing or continue doing the training, your business will grow. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो आपका जो ध्येय है, अपना फोकस पे लूज ना करें। आप अपने ध्येय की तरफ अग्रसर रहें, यानी जो आपको प्राप्त करना है उसकी तरफ आप फोकस रहें, उनके एकाग्रचित्त रहें। आप साथ साथ आप लोगों के साथ टच में रहें, लोगों के साथ कनेक्टेड रहें। नॉर्मल तरीके से, जैसे वन टू वन बात करते हैं उस तरीके से, या फिर आप ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े रहें। अगर ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप उनसे जुड़े रह सकते हैं। और साथ साथ लोगों को आप आमंत्रित करें, नए नए लोगों को आमंत्रित करें, अपना फोकस वहां पे लूज ना करें। जो आपको मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ, एक क्लू देना चाहता हूँ कि आपका जो फोकस होना चाहिए, जो आपका ध्यान जो केंद्रित होना चाहिए, वो नए लोगों की तरफ होना चाहिए, नए प्रोस्पेक्ट की तरफ होना चाहिए। उनको इनवाइट करें, उनको आमंत्रित करें, उनको बताएं, उनको जानकारी दें, उनको गाइड करें। ये कोई मैं तो नहीं लगता कि वो किसी भी देश के हों या किसी भी कंट्री के हों। हमें उनको समय समय पे उनको काउंसलिंग करनी है, उनको जानकारी देनी है, साथ साथ उनको हमें नए अपने उत्पादों के बारे में बताना है, और उनको मतलब उनको बेसिकली हमें टीच करना है, उनको हमें सिखाते रहना है। इसके अंदर जो मेरा मैसेज छुपा हुआ है, वो जो क्लू है, वो आपके लिए एक मैसेज है, जो इसका मेन पॉइंट है कि कभी हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। यानी कि लगातार हमें बात करते रहना है, लगातार हमें इस काम को दोहराते रहना है, और साथ साथ हमें लोगों को ट्रेनिंग भी देते रहना है, जिससे कि आप इसके अंदर आगे काम को करते रहेंगे और दोहराते रहेंगे, लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आपको कभी रुकना नहीं है। बस
आगे बढ़ते रहना है इन्हीं बातों को दोहराते हुए। So we have know a lot of things, a lot of info that we gained today. So about DXN business. Now that we want to know, can you share with us your best story about yourself in DXN? आज हमने बहुत सारी जानकारी आपके माध्यम से यहाँ पे प्राप्त करी, हमारे दर्शकों ने प्राप्त करी। क्या आप हमारे साथ अपनी डीएक्शन से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ कहानी साझा करेंगे? Ahora hemos conocido mucho acerca de usted, ¿no? Muchas cosas nos ha compartido, pero en este momento quisiéramos saber si nos puede compartir su mejor historia sobre usted en DXN. Ok, para mí el mejor momento cuando empezamos como distribuidor dependiente fue conocer a Dr. Lim 3 meses de conocer de XN y luego cuando calificamos a Diamante. Otra historia que prácticamente nos compromete más fue celebrar el 20 aniversario de XN Malasia y conocer la compañía, la oficina central, el cultivo más grande del mundo de Ganoderma y la fábrica de XN. Y también en ese entonces conocer embajadores coronas. Y luego cuando me hice diamante corona. Y estar en los entrenamientos con Dr. Lim en Dubái, en México, en Las Vegas, en otras partes del mundo. Eso fue para mí lo máximo. Y hace poco, cuando nosotros llegamos a alcanzar el PIN, soñado por muchos emprendedores de red de DXN. Yo creo que la mayoría sueña alcanzar el PIN más alto, el PIN más soñado, es convertirnos en embajador corona. Fue agosto de 2000, donde realmente dijimos, valió la pena. Y ahí estamos ahora más comprometidos como nunca de continuar con este proyecto de vida real. Realmente ha sido estos 10 años muy bonito de poder transmitir, de poder compartir, de poder llevar salud y felicidad. Thank you. So the best moment is when we started doing DXN. The best moment of our lives during these 10 years is when we really knew about the company. And the best moment of all, it was when 3 months later I started doing DXN, I met Dr. Lim. So this is the best opportunity that I have and the best part of my journey in DXN. Then I can tell you that another important moment is when I qualified as a Star Diamond. It was a very special moment for us. We started our growing in DXN. So this is another important thing. Another thing that I can mention here is when we travel to Malaysia to celebrate our 20th anniversary. So when we were there, we knew the company. We went to the main office. We knew the farm of Ganoderm. So that was very important for us. We met a lot of Crown ambassadors. Then, when I became Crown Diamond, I got a lot of trainings with Dr. Lim. For example, in Dubai, then in Mexico, then we went to Las Vegas. We went there and we had trainings with Dr. Lim. So that was very important for us. And the best of it is that, for example, when we get our dream came true that we got our highest level here in DXN. We got the Crown Ambassador pin. So all of the leaders dream with this a very important pin. So last August 2019, this is when we really knew that it was worth it because we got the pin of Crown Ambassadors.
So since that time, we are full fit, committed with DXN. We have to follow giving the projection of a real life with DXN. So during these 10 years in my journey with DXN, we are very happy because we had the opportunity to share health, wealth, and happiness to many people. बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है कि जो मेरे जीवन के साथ डीएक्शन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां जो मैं साझा करना यहाँ पे कर चाहूँगा आपसे। मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन जो पल था वो सबसे पहले तो ये था कि मैं डीएक्शन के बारे में मेरे को जानकारी मिली। मुझे इस कंपनी के बारे में जब जानकारी मिली उसके 3 महीने बाद मुझे मौका मिला हमारे फाउंडर सीईओ डॉक्टर लीम सर्जिन से मिलने का। ये मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन और खुशी का पल था। उसके बाद एक दूसरा जो मेरे साथ जो क्षण आया जब मैंने क्वालिफाई स्टार डायमंड क्वालिफाई किया और ये मेरे लिए एक बहुत ही यादगार और बहुत ही भावुक पल था क्योंकि मैं डीएक्शन के साथ ग्रो कर रहा था, मेरा बिजनेस डीएक्शन में ग्रो कर रहा था। उसके बाद जब मैं डायमंड क्वालिफाई हुआ तो एक और मेरे साथ जो मेरे को याद पर जो मेरा पल है वो अगला था, वो था कि मुझे घूमने का मौका मिला, मुझे मलेशिया जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने कंपनी के बारे में जाना, मैंने कंपनी का ऑफिस देखा वहाँ पे, साथ में मैंने गैनोडर्मा फार्म देखा। वहाँ पे बहुत सारे मैं 20th एनिवर्सरी के दौरान बहुत सारे जो सीए आए थे, क्राउन एम्बेसडर्स आए थे, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। और साथ साथ मुझे जो अगला जो मेरा जो पड़ाव आया, जो एक यादगार पल था, वो था जब मैं क्राउन डायमंड बना तो मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग डॉक्टर लिम के द्वारा मिली। मैंने दुबई में, मैक्सिको में, लास वेगास में उनके द्वारा ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी। ये सब मेरे लिए ऐसे था कि जैसे मेरा एक सपना था जो पूरा हो रहा है। और आखिरी में जब मैं और आगे बढ़ा तो मेरे लिए और एक महत्वपूर्ण पल आया, जैसे कि मेरा जो सपना था, जो हर किसी डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है कि वो क्राउन एम्बेसडर बने, और मैं क्राउन एम्बेसडर बना। और ये मेरे लिए ऐसा था कि जैसे कि मेरा एक सपना पूरा हुआ, जैसा कि हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर का ये सपना होता है। और ये तो सब चीज़ें थी और मैं काम करता गया, आगे बढ़ता गया। पिछले 10 सालों में मैंने कई लोगों के साथ काम किया और एक बहुत बड़ा मैंने अपना व्यवसाय या बहुत बड़ा अपना एक नेटवर्क मैंने स्थापित किया पिछले 10 सालों में। और आज भी मैं लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बताता हूँ, उनको जानकारी देता हूँ। That is some very unique experience to have. Now, since we already know your best moment in DXN, now we would like to know where do you see yourself in the next 3 years and what will be your next plan? आप अगले 3 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? आगे क्या होगा? Ya sabemos que en este momento usted está en el mejor momento de su vida, pero quisiéramos saber dónde se ve en los próximos 3 años. ¿Qué cosa sigue? Ok. La verdad es, esto para mí recién comienza, ¿no? Si yo he tomado la decisión de hacer redes de mercadeo y hacer realidad mis sueños, obviamente no vamos a parar los próximos 3, los próximos 5 años, porque al final, a pesar de alcanzar un objetivo, el PIB, el embajador Corona, es hacer XN en los próximos 3, 5 años, hacer que la compañía esté dentro de los top 10 de las compañías más grandes que existen en el mundo en las ventas directas. No vamos a trabajar, eso es más por el agradecimiento a Dr. Lim, a DXN. Definitivamente en los próximos años vamos a desarrollar líderes dispuestos de comprometer sus sueños, comprometerse con la compañía, en comprometerse con sus distribuidores, socios de negocio,
para que ellos también puedan alcanzar el pin de embajador. Así que apenas estamos empezando en Latinoamérica y estoy seguro, juntos con todos los líderes, embajadores coronas, diamantes coronas, con la gerencia, estoy seguro que vamos a hacer historia en toda Latinoamérica, especialmente en Sudamérica. Thank you. So, for sure, this is something that is just a starting for me. If I took the decision to start doing this network, this is because I wanted my dreams come true. So I'm not going to stop. I'm not going to stop in the next 3 or 5 years. I will continue because I want to achieve all my goals. I want to get all my dreams come true. So I will do DXN for the next 3, 5, and 10 years because this is something I want to do. Someday, I want that DXN become I want DXN that be in the top 10 best companies that do direct sellings. And this is something because we want to thank Dr. Lim for doing this business for us. So in the next years, I want DXN to be in the top 10 of the best companies of direct sales. Then I want DXN make a lot of leaders. I want that DXN have very committed leaders that fulfill their dreams. I want the leaders that be committed to the company, leaders to be committed with their distributors also, and I want all of them to fulfill their dreams. This is just a starting for me. To become a crown ambassador is just the beginning for my business. So I am sure that together, the leaders, the distributors, the service centers, and the management, we are going to build a very great history in DXN. Not only in DXN, but we are going to make history with all the leaders in South America. ये मेरे लिए एक नई शुरुआत के जैसा है। मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। अगले 3 सालों तक मैं आगे बढ़ता रहूँगा और मैं डिएक्शन करूँगा 3 साल, 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक। और मैं अपने सपनों को, जब तक मेरे गोल्स हैं, जो मैंने बनाए हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, उनको पूरे किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मैं लगातार डिएक्शन करता रहूँगा। एक दिन डिएक्शन 10वें नंबर पे, टॉप 10 नंबर पे जब कंपनी बन जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल ये हम हासिल भी कर लेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर लिम का, कि जो हमारे लिए इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आए और हमारे लिए दिन रात वो प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ मैं डिएक्शन के जो मानने वाले हैं, जो डिएक्शन पे विश्वास करते हैं और जो डिएक्शन पे ट्रस्ट करके डिएक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी जो सपने हैं वो भी पूरे करने के लिए, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग, उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और क्योंकि लोगों के सपनों के साथ जुड़ के ही हम एक साथ मिलके ही अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जितने भी लीडर हैं, हम, आप, मैनेजमेंट, सब मिलके प्रयास करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक क्राउन एम्बेसडर बनना ये जस्ट एक मेरे लिए शुरुआत है, क्योंकि ये मेरी शुरुआत है, ये तो एक पड़ाव था। अब मेरी असली जो शुरुआत हुई है वो अब शुरू हुई है, जिससे कि मैं अपने सपनों के लिए आगे बढ़ूंगा और एग्रेसिव तरीके से मैं आगे काम करूंगा। हम एक साथ काम करेंगे मिलके, जितने भी लीडर हैं सभी लीडर्स, मैनेजमेंट्स के साथ मिलके हम लोग काम करेंगे और एक इतिहास रचेंगे, एक अभूतपूर्व इतिहास रचेंगे डीएक्शन को टॉप लेवल पे पहुंचाने के लिए, डीएक्शन को बेस्ट कंपनी में पहुंचाने के लिए हम लोग मिलकर साथ में काम करेंगे और एक गौरवशाली इतिहास बनाएंगे। So we have finished our session for today, and I would like to thank Mr. Jaime and Mr. Vijay to translate in Hindi, and Ms. Luisa to help translate in Hindi. And most importantly, I would like to thank all of you for staying through this session. As usual, I hope that all of you
have picked up some tips from this session from our Mr. Jaime, Crown Ambassador from Bolivia. So I will see you in next Tuesday, same time, 5:30 p.m. India. And so we end this session. Thank you. Stay safe and stay healthy. Go Crown.